Yo, we out here, guys, today at Pune Recording Studio, and it's me, my boys. We got JMS in the house. JMS, make some motherfucking noise, bro. Yo, We got क्या हो रेजी भाई? yo, all good, bro. All good, Maji. How you feeling? We got Altamash, bro. Altamash, come show your face, bro. You already saw him. He was right here. He was right here. And bro, come through, man, Manoj. Or Shaden, our latest newest member. Shaden मेरा भाई. Newest Altamash member मेरा of भाई. the newest member of the tribe. Hey. That's what's up. That's what's up. So we are out here, guys, and we are like streaming this shit, and we are like, yo, let's do a podcast kind of a situation, hai ka nahi? Crazy thing. We'll do some raps also in the middle, and we'll see how it goes. But besides that, I was just like, yo, I just wanted to like talk about the cipher a little bit. What do you, bro? The fucking ciphers are going crazy, bro. What do you think? Yeah, always bro. मतलब सीन बहुत बिल्ला हो गया है bro. है ना? समझ रहा है क्या? इधर नजदीक रख. Yo. थोड़ा इसको उठाना ऐसे. Like talk like this. See, like I'm so close to this shit. Can you lift it? Yeah. Bro, shout out to JMS. He has always helped me, and the cipher. When we come here to the studio, he always helps me to set up the stands and stuff. At this point, bro, he's as good as an engineer. Yo. Bro, somebody check. Somebody see the live, bro. See the live on the phone. जिधर Yeah, live on music है the उधर phone. मैं हाजिर है भाई. भाई पर लेकिन मेरा क्या बोलने का मतलब था, इधर ही अपन ने 6 तारीख को 6 अक्टूबर को ओपनिंग किए थे स्टूडियो का, ये स्टूडियो बराबर का. बराबर. और वो दिन अपने को लगा नहीं क्या, मतलब कम लोग आएंगे जो भी तो इन एंड ऑल आई थिंक अराउंड 40 to 50 पीपल केम, हाँ. यू नो, सैटरडे के दिन ना? सैटरडे के दिन, लाइक टोटल हाँ मतलब सैटरडे एंड संडे. संडे के दिन, टोटल हाँ मतलब संडे के दिन ज्यादा आए थे, सैटरडे के दिन कम आए 50. थे. 50 गिव और टेक, हाँ bro. because some people came early, some people came हाँ. late. If you like club it all together, it was around like a little bit slightly above 50, you know, 55 and whatnot. That's where we got the idea. Yo, fuck yeah, let's go. Cypher. Let's go do a cipher. बैठे बैठे. नहीं, this is on my main profile, AZN MP3. So when we got the idea of the cipher, I mean, just a week later, the next weekend only, we did the first cipher. Yeah. Volume 1, and the volume 1 was fucking crazy, bro. The people that showed up, bro. आपने को लगा 80 आएंगे. आपने क्या बोले भाई, ये टाइम पे 50 है, ये टाइम पे 40 है, 40 का डबल 80 आएंगे. 120 आ गए थे भाई, full power. It's not on? No, it's not. Show me. Are it's not there, bro. It's not on Pune Recording Studio, bro. Check your YTP. Is it an MP3 पे? Let me check. Wait. Is it? नहीं है. Okay. नहीं वो रेड डीपी वाला रे ब्रो. हाँ, live है ना भाई चालू. लाल डीपी वाला. Whoa. Which one? It's on. Wait. रिफ्रेश इट. अभी तो दिखा रहा था लाइव. देख दिख रहा है लाइव. हाँ चालू है ना लाइव. लाइव इज एंडेड बोल रहा हूँ. यहाँ से कुछ सीन हो गया. इंस्टाग्राम से कुछ तो ब्रेक हो गया. Did you tell something? Now it's saying going live. Oh, now we're going live. Which one live? Yeah, cool. Now we're live. Yeah, we are live. Hmm. That's what's up. Join this shit. Crazy. चालू है भाई. वेलकम भाई लोग. सीधा 21 22 आने दो भाई. So basically, bro, what I'm saying is we are out here today at Pune Recording Studio, and we are out here with the boys. JMS is with Yo. me. JMS, say hi, bro. Yo, JMS 2003 तुम्हारे सामने का in the Pune recording studio. That's what's up. Yeah. He's an OG, and he's Yeah. an Inner Circle member, and we're out here. We're doing this shit. Come reintroduce yourself, bro. Now it's on. It wasn't on all this time. Now we got What's Shaden in the house. Pune Recording Studio. Yeah, we out here. We're fucking killing it. Love from Jaipur. I can see all that, bro. That's mad. That's fucking crazy, bro. Crazy. Yeah. Yeah, Shaden. Now you can see yourself. Open quickly and check. Hey, come and gone. Altamash is also joined from outside while in the hood. smoking a cigarette. But that's what's up. So I'm like, bro,
जो इधर ही अपन ने यही हॉल में हमने we did the first the opening weekend of the studio, and I think people who follow me from a long time, bro, they know this shit. Like they've seen this shit, you know. They've um seen the whole opening of the studio. Saturday के दिन barely, bro, like 4-5 people हाँ came. ब्रो बहुत कम आए थे. मैं बोला कि भाई इतना भारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब फ्री रिकॉर्डिंग मिल रहा, फिर भी पब्लिक आ रही ने. बोला ये क्या सीन है ब्रो. और फिर संडे संडे तो ब्लास्ट हो गया. संडे अचानक से संडे ब्लास्ट हो गया. 40-45 people, स्टूडियो 50 जाम people. ब्रो, स्टूडियो जाम. भाई ये जगह फुल हो गई लिए मतलब नहीं यार, like people are standing from here till there, bro, मतलब and it's feeling like a cipher, okay, and that's where we got the idea. पब्लिक know ऐसे आगे लिए सीन नहीं का होलसेल में लाया पर बेच रहे ले. हाँ. समझ रहा है, इक्का दो इक्का दो इक्का दो. what? And bro उधर अपने को आइडिया आया कि नहीं यार, let's do a cipher. So I was like fuck yeah bro, let's you know let's plan a cipher. तो वो संडे था 6th and 7th. वो एक भारी मूव हो गया, बहुत भारी. बहुत भारी मूव हो गया. फिर उसके बाद ब्रो द फॉलोइंग वीकेंड ओनली संडे को वी डिड द फर्स्ट साइफर वॉल्यूम 1, और हम लोग सोच रहे थे नहीं क्या, मतलब ये ओपनिंग पे 40 लोग आए तो साइफर पे आएंगे 80 लोग. 80 लोग 120 आ गए ले ब्रो, Blast हो 130 हो गए bro. ले ब्रो. लाइक इट्स नॉट स्टॉपिंग ओनली, पीपल आर शोड अप एंड द फर्स्ट साइफर वाज क्रेजी ब्रो. क्रेजी dude 100%. The way it happened, like people, like you know, the people that came in the first cipher, the talent that we saw, Yeah, jogi bun gaya. I still remember that. I still remember so many lines from the first cipher, bro. I'm waking up in the morning and I'm like saying something tacky, bro. You know what I mean? मैं कभी जीते नहीं, जाते कभी तो नहीं, केस कभी फिक्स आए ना यार. कभी मैं नहीं, क्या कभी बोल नहीं. रहा था? And it was fun, bro. It was mad, bro. First cipher was crazy, bro. हाँ मैं देखा ना, जो सेटअप देखा ना, मतलब भाई ये तो सेटअप पे दिख गया कि नहीं क्या साइफर है डूड. क्योंकि मोस्टली साइफर में कैसा तुम आओ बजो, इधर कैसा बारी बारी बारी. नहीं तो हर साइफर पे नहीं अरे ब्रो मेको जो जिसको हाँ. ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो घुस के he lit up the stage. And that's what happened last time also, bro. Like we had like a lot of you know those street cipher rappers come, and they were just eating up, they were just hogging up the whole thing, you know. And I had to take them in the side and I had to tell them, bro, like a lot of rappers over here are beginners, okay. They've come to like learn and they don't have that much confidence. That you guys have done street cipher पहले से तुम लोग करते रहते हो street cipher, ये मतलब नहीं करते तो उसको करने दे, मतलब नहीं यार तुम लोग डोंट ईट अप द होल थिंग. तूने किया ना, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अभी तू सारा कभी चुपचाप बैठ जा, तूने तो निकल जाए इधर से करके. इधर आफ्टर पार्टी में भी घुस गए थे वो लोग. आई डिडंट वांट देम हियर बट दे वर हियर. लास्ट टाइम वाज क्रेजी ब्रो. लास्ट टाइम blast was crazy, yeah. crazy. Last time more people came than the first volume 1. Volume 2, Cypher Volume 2, bro, a lot of people came, bro. A lot of people came, and the way it happened was crazy, bro. Like, yeah, we have free entry so that people come, but then you know, a lot of people come, and the people that come, sometimes we don't want them. You know what I mean? वो सिर्फ भसड़ डालने आते ब्रो. थोड़ा भसड़ डालने आते, किरकिरी करने आते ब्रो. बट अगर देखने को जाएंगे ना भाई, खाली अक्टूबर में, ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके, 6th, then the second one was I think on 12th or something like 12th October. Yeah. 12th October was 30. the first. Yeah, 12th October, 6th October, 12th October, and this one was on 26th. ये तीन साइफर करे अपन ने एक महीने में, and every time we did it, it multiplied. It like became bigger and bigger and bigger. Like, you know what I mean? Like we did first we did like 40, and then we did like 80 and 120, and then we did like 160. Bro, उस दिन बारिश नहीं हो रही थी ना 200. ब्रो वो टाइम बारिश एक बहुत ये था, मतलब स्पीड ब्रेकर था उस सीन पे. हाँ ब्रो. Like that was the first one that you came to, right? And when you came and when you saw it, how did you feel like? It was like I got to see so many types of flows and different types of artists, and मुझे खुद को भी perform करने का मौका मिला. Yeah. It was like a big exposure and eye-opening thing. Like, Yeah. And it was like, bro, you get to see all this like rappers. You get to see all this talent that you will not see on YouTube or like on Spotify or all something. are underground. And like you get to see all these different styles that you have never found on your own. Never. That last guy, Bro, on the that volume second. crazy, bro, crazy. Bro,
Lil Candy Dope. Lil Candy Dope. Arey bro, that guy was so crazy. He had I a called him headbang today. in his playlist, bro. Proper like ऐसा वाला उठा विषय दिया है ब्रो, ना। महफिल उठा दिया ब्रो उसने. उसके पहले इतने झगड़े हो रहे थे और तो हो रहा था bro. और फिर like he came bro and bro he was destined to go last that day, huh? Like he was supposed to go last cause what do I say, like he had to go last bro cause he came on such a time, no, when we needed him the most, and that guy delivered bro. Proper delivery. Headbangs bro, his flows. We all like headbangs, whoa, like ये कौन है, क्या है मतलब. नहीं, I'm like bro, you Everyone was please like, come, "अरे please bro, come ये again." क्या सीन हो गया लेके? I'm like bro, I'm gonna click a picture with him, like, you know, that was the deal. I'm like भाई मेरे को चाहिए picture इसके साथ. There was one rapper, he performed first, Emir. Yeah, he's the Inner Circle member now. Okay. Emir is the Inner And Circle we member now. can't forget the Gagandeep. Gagandeep guy, yeah. Gagandeep bro. All these guys are damn talented, bro. Like, that's what I'm saying. Like, if you go to a street cypher, you don't get to see such talent, bro. You understand what I mean? Street cypher में you'll see those Marathi guys only, bro, sitting. एक beat बजाओ, continuously एक ही beat बजेगी. सब लोग आएंगे बारी बारी उस पे रैप करेंगे. 7-8 जन एक beat पे ही रैप कर रहे. Okay, and all of them have the same topic, bro. Same topic. हाँ. मराठी रैप, मैंने तेरी बहन को ठोका, तेरी मादी मेरे को टेक्स्ट करती नहीं, like पुलिस चौकी में विषय हो गया. Like, that's it. This is it, bro. Next guy comes. Guess what he's going to say? Same thing. The same fucking shit. No, like, उन लोग के वही rotational topic रहते हैं. नहीं हाँ, और देख लिया भाई, बोर हो गए हम लोग देख के भाई, बस हो गया वो, नहीं देखने का है और. नहीं यार, done. Like, this is not what सुनेगा तो संबाटा को सुनेंगे bro. हाँ. I'll listen to the original guy. You know what I mean? अगर ब्रो तू मराठी में कर रहा लेकिन कुछ डिफरेंट है ब्रो, कुछ नया है ब्रो, नहीं क्या, तो फिर हाके Bro, when Sambata came to me, right, so that time he had done Pinnak and he had just done one song and he came. Okay, and when he came, no bro, like I heard what he's got. Like MC Stan used to do Marathi rap before that, but थोड़ा जैसा अपन हिंदी में रैप करते और हाँ एक दो लाइन अपन बोलते ना इंग्लिश में, so the same way he used to do like that, you know. You just come like drop a Marathi line here, drop a Marathi line there, bus. Sambata came full Marathi and he's rapping like how you talk, you know, like conversational, not written, like it doesn't sound like it's written, and that's what made it so fresh and new. And when I heard him rap, no bro, and he was like nailing the gangster style. He could have done anything. He could have done storytelling. He could have done, you know, like pop. He could have done like club bang, but he chose gangster, and it suited him so much. So when we saw that, no, we were like, yo, this is crazy. And then, you know, in the previous studio in Wave Layer in Rahija, bro, that's where Sambata came. So he did like, you know, that song with about Godse. They made a movie, no, with Ranveer Hooda. That one he did over there. He recorded there. Crazy, he recorded that one with Riyar Saab, both the songs with Riyar Saab. And then he recorded that Red Bull campaign ka rap with this guy, Karan Kanchan. All that he recorded in that studio, bro. Fuck. Everything. I Crazy, have all the vocals in my Google Drive right now. I have it right now. bro. You know what I mean? All dry fucking vocals. I have it. I have Recorded there only, right? all. Fuck, So bro. I know the real stuff. You know, I know the real shit. And all these fuckers that be coming to the cypher and they'll be trying to do what Sambata did. Like I listen to that, I'm like, they don't even copy it properly. It's very annoying, you know. They don't even fucking copy it properly. Roll number 1, roll number 2. हाँ, रोल नंबर 1 ऐसा कर डालेला है ना यार. मतलब भाई कॉपी कर रहे तो बराबर से तो करो नहीं क्या. Like Sambata, what he does, no bro. हाँ. What Sambata does, no bro, like when he raps, no, like the way he writes, no bro, he writes in the middle of the space. Like अगर इधर kick है और इधर snare है ना, तो इसके बीच के space में he writes. Okay, and the way these guys rap, no, the most of the I've heard them because they're just copying, so they miss that detail, and they just sound like, you know, like a normal like snare के ऊपर rhyme, snare के ऊपर rhyme, 1 2 3 rhyme, 1 2 3 rhyme. You know what I mean? And it's the imitation is there, but it's not correctly done. Like, and I see that, and I'm just like, bro, ये लोग खाली गाली गलौज करने को आए, खाली आते हैं वो लोग रैप के नाम पे और खाली गाली गलौज करते हैं. You know, they don't say anything which is like
ओ दैट्स सो कूल, ओ दैट्स सो क्रिएटिव, ये ऐसा साउंड मैंने कभी पहले सुना नहीं, ये वो ऐसा वो सब नहीं देखने मिलता उन लोग से. सेम फ्लोस. तो अभी भाई वो क्या नहीं कर दिया, मतलब अभी अगर तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे ना, उसके अंदर लिखेला है ब्रो डू यू डू मराठी गैंगस्टर रैप, बोला यस, तो उसको लोकेशन ही नहीं मिलेगा. क्राउड फिल्टर लास्ट टाइम आया था वो कैसा था भाई. हाँ अरे ब्रो वो स्टार्टिंग में लिया ना उसके हाथ माइक में, सब हट गए सब, like he was it towards the end, okay, he didn't get to rap, okay, so there were so many people obviously, and I'm taking one person at a time, one person at a time, and this guy has come, okay, and he's the same Marathi bullshit, bro, and he's trying to, like, you know, he's trying to tell me, yo, take me, and now the time is up, right? So we started at 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, और 9 to 10 हो गया. We extended the time. हाँ, we extended 2 hours, and now it's 10:15. Okay, so we need to pack up also, right? Leave. और 10:15 तक भी नहीं छोड़े ब्रो हम लोग ने. हाँ, और मालूम क्या हो रहा था फिर, ये जो होता है ना वो, he is getting irritated. He was like there, he is getting irritated, and I'm like, bro, it's fine. Like I like मेरे को किसी को नाराज नहीं करने का. हम like हाँ ठीक है भाई, मतलब ये आया इतनी दूर से आया, बोल रहा कि भाई मैं बहुत दूर से आया, मतलब ठीक है भाई, अच्छी बात, like, you know. But he was so disrespectful, bro. He's coming to my cipher and he's showing me a middle finger because he's showing me a middle finger because I didn't let him rap. I'm like, bro, you don't understand the matter, like the fact that, you know, and after this we are going to after party, you can come over there and you can rap, there's no time limit over there, bro. So he's not ready to understand, and he got some hooligan motherfucker with him, bro. खाली चढ़ा, खाली तक चिल्ला रहा था वो, सुनने कुछ तैयार नहीं भाई. हाँ ठीक है, बोला ना ब्रो तेरे को, चिल्लाते बट I'm like ठीक है भाई, so माइक दो हाथ में और दे दो और हट जाओ साइड में. तो I gave him the mic and he rapped and I'm like cool. Nobody wanted to hear him. I didn't want to hear him. No, all the people whole crowd came out of it. Yeah, the whole crowd came out of it. Only him and his homie. There were just 2-3 people. Nobody heard it. Nobody wants to hear him after rap, that scene. Nobody heard his rap and we left. फिर बाद में साइड में उसका दोस्त आके बोल रहा, तुम ऐसा बोल रहे, ऐसा मिर्ची लगेंगी ना भाई. मैं बोला भाई शांत हो, नहीं तुम ऐसा, बोला हट, और मैं चले गया उधर से. मतलब he's not listening, he's not having a conversation, he's talking at me. I'm like, I don't have time for this. Then I went back and then that guy killed it. Yeah, Lil Candy Dope killed it. Now the next day what happened, no bro? So I've woken up, okay, and these guys, you know, they've like written a story about me that they've taken a screenshot of my profile and they're like, ये लौड़ा इसको कुछ समझने नहीं आता, साइबर के नाथ में कुछ भी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये वो ऐसा वैसा. एंड they're like, यो ये इसको तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कौन पण रैपर बनेगा, एंड people die out here and shit. नहीं है, so like we don't want anyone to get out. So I read that and I was like why, you know, like if you follow my work, if you see what I've done so far, bro, it is impossible for you to hate. Yeah. Because I'm doing none of this for me, you know. 100%. Like the page that I have, not a single video is for me, like you know, like, oh look, I'm so cool, look at me. I have songs, I have 8 songs, I want people to listen to my songs, but I don't promote any of them, you know what I mean. Like I just teach people like whatever I know. And जो भी cypher भी जो भी हो रहा है ना भाई, like I'm just like trying to get people a stage, because I know that when I call people will come, and when people will come, so many of them will come, automatically there'll be a crowd, and when there's a crowd there's a stage. Yeah, right. 100%. So that was the logic, and it came true. It worked out very well. But now it's like, bro, now I'm helping people out, okay, because even I want to see talent. Even I get excited when I see some crazy new sound, when I see some, like, you know, new kind of a rap or something. Even I get excited. लेकिन ये सब कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बीच में hater आ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. Some people telling me, bro, if you're doing good, you'll obviously gonna have some haters, ये वो. I understand that, but it's more if you think about the psyche of this fellow, no bro, it's a little bit deeper than that. Okay, so this guy, okay, think about it. This guy is, you know, like a Rastapet guy or a Nanapet guy or some, like, you know, like somewhere in the middle, like a Dharavi of India, like, you know, that kind of Dharavi of Pune, like, you know, that kind of a place he comes from. Okay, Marathi fellow, okay, early 20s, 22, 23, okay.
and no job and wants to do rap, wants to become a rapper. Obviously, you can understand his mindset is already like, because he's surrounded with friends who are always in the police chowki, ye wo, aisa vaisa. This is the character that we are talking about. Okay, matlab he is somebody who attracts only negativity. Okay, first of all. Second of all, read what he wrote in the story. He said, bro, he said, इसको बंद करना पड़ेगा नहीं तो कोई भी रैपर बनेगा. So it's coming from a place of fear. Okay, so this guy is scared. He's like, bro, look, like if he was confident in his talent, उसको ऐसा लग रहा था नहीं क्या भाई मैं टैलेंटेड है, मैं जो भी रैप करेंगे मैं पॉप होने वाला है, मेरी मेहनत की बात है. अगर उसका वैसा माइंडसेट रहता तो ही वुड बी लाइक हाईलाइट हो गया रहता. हाँ, तो ही वुड बी लाइक, यू नो व्हाट, आई डोंट केयर हु इज रैपिंग, आई नो आई एम डोप, so I'm going to be dope, I'm going to win. But his thing is like, bro, other people are also getting stage. So now if other people are getting stage, the competition is going to increase. If the competition is going to increase, then anyone's going to become a rapper and I'm going to be sitting here only doing not being a rapper. So that's what he's thinking. He's not thinking about lifting himself up. He's thinking about pulling people back, dragging people Putting back. others down, bro. You understand what I mean? Always. And that is what I saw, and I was like, yo, like I would have never learned this if it wasn't for the Volume 2 cypher, for that fight, and the next day he posted that story, bro. He had like so many people post that shit. You know what I mean? Different kind of people, right? Different kind of people. And like, you know, like bro, you wanna come here? Because I have a conversation with you. Yo, easy mera bhai in the house. Come on. I'm like, what was I saying? If you think about it this way, right? Let's so go. Now Shaden is in the house. He'll come in a bit. What was I talking about, bro? What was I saying? Get exhausted, like not get exhausted, but different kind of people, like Trippy. That guy, no, Trippy, bro. I don't know if you've seen the videos of the Volume 1 cypher. The guy who's looking like really artistic. Come a little close. You're not in the frame. okay. Come like here. Cool. So, like when you see that guy, no, he's the guy in the cypher, and I think Yash is in the house. So he called me and he's like, bro, I know these guys. He's like, I know these guys. They're ops. Like, so, okay. They're ops, and like when I saw them, no, I bounced. The audience must be confused, like, what the fuck are these guys talking about? We're just riffing, we're just freestyling. You know what I mean? So I was saying, bro, Trippy called me the next day, and he's like, bro, मैं इन लोग को पहचानता हूँ, ये लोग ops है, और मैं इसलिए जल्दी चले गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नहीं उधर कुछ झगड़ा हो, अपना साइफर का माहौल इतना अच्छा था, तो फिर मैं जानबूझ के चले गया करके. So he left and he's like, you know, telling me that, bro, like, you know why they're doing that? I'm like, why? So he's like, bro, ये लोग ना भाई, ये लोग पब्लिक गार्डन में नहीं क्या फ्रीस्टाइल रैप करते, तुम तो डायरेक्ट टर्फ बुक कर डाले रहे, and like, you know, you've put like the whole gazebo and shit, and you've brought your speaker, and then like कोई भी मतलब ऐसा अपना वीडियो बना के डालने के लिए पैसे लेता, तुम तो फुकड़ में पब्लिक का वीडियो बना रहे और तुम डाल रहे एकदम हाई क्वालिटी एडिट करके. So he's like, you know, like इन लोग की गांड जलेगी ना भाई, मतलब, you know what I mean? They're going to get pissed off, like they're going to be like, what the fuck, like somebody just comes and does this, they're going to be pissed off. And then they try to be a part of it, but the way they did it, obviously they're disrespectful motherfuckers. If they were respectful, then even you would have allowed them, you know. But they were disrespectful to you and everything, so obviously, so now that's the scene. So I understood and I'm like, fuck him, bro. Bhai, apart from me performing, but I also enjoyed the part where others were performing. So I think that every artist should enjoy that. Exactly. You see when Gagandeep comes, and he sings, everybody lives. Damn, bhai. Everybody Gagandeep was crazy, bhai. Like the way he switched he had so many tones in different aspects, bhai. That was crazy, bhai. So in the third cypher, no, in volume 3, for the 9 people that are watching right now, 8 people. What's the deal, bro? It's Tuesday, 8 o'clock. People have other things to do. Dinner time, I guess. So, I'm like, for the third cypher, no, bro. We're going to keep 2 bodyguards, first of all. Okay. Second of all, we're going to keep all the registration system away from the cypher. Like how? Like, we'll be like, yo,
wherever over here, no, there's just going to be the audience Hmm. and the rapper, like the Hmm. person who's performing. Whoever Hmm. wants to see the performance, come here. Okay. Whoever wants to rap, go and register there. Register there and then come here. Okay. जब तुम्हारा नाम आएगा, we'll call you. Like in order. In जो order. order में That's दिया it, है. हाँ. That's उधर से नाम आएगा तो he will call you. Hmm. We'll not pick from the crowd, because Yeah. usually what happens is we pick from the crowd and go like, oh, take me, take me, take me, and then they all get irritated and they all go like, yo, they're just waiting to like, you know, like मेरी बारी कभी आएंगी, मेरी बारी कभी आएंगी. They're not listening to the rapper in the Other middle. rappers, right. And then, you know, I'm standing over there in my position. You know what it looks like? It looks like I'm looking at 10 irritated faces. Damn, bhai, Like, actually. all of them were like just irritated, and they're like, take me, take me, take me, take me, take me. Like that's the scene that I'm looking at, and I'm भाई like, मैं fuck. एक सेकंड के लिए 5 मिनट के लिए आया था आपके पीछे, तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही खत्म हुआ एक का रैप, तो 5-6 लोग आ रहे सामने, भाई मेरा टर्न है, तो फिर वो ऐसा लगा भाई. Yeah. So now we'll just keep it like very straightforward. We'll be like, bro, whoever wants to rap, go to that table over there, away from the cypher. Do your kirkiri over there. Give your name over there, and you come. And when he sends me the name, no, then only I'll play. call this guy and I'll tell him, come karke. Dope भाई. Simple as that. That'll be the vibe. Shaden, my G, Shaden AZN, JMS ने लिखे है. That's what's up. It's on, it's on, it's on, it's on. You don't let them rap, no bastards won't watch. No, cunts. No. You don't let them rap, they'll not watch. No. आ जाओ. We can try and we can do a rap, bro. Yeah, can you freestyle? Like, Yeah, sure. Check, 1 2 1 2. Check. Bro, just see if you can still hear me, or my mic is on mute on your live. You can hear me, no? Okay. Now, अभी हाँ ठीक है I understood. Okay. I'll play your beat. let's go. Drake that beat. Please give him a shout out. Who? Karnataka. Yeah, Ashwin. Can you rap on this? Yeah. Hey. मौसम बदलते पर बदला नहीं मैं, बदलता वक्त में चलते ही जा रहा अपने जोन में, कहते जा रहा चीज़ें मैं रहता नहीं खुद के ही जोन में, करता बातें खुद के जोन में, टोन कभी चेंज ना करूँ सामने देख के मैं, लोग खुद की भोग खुद के खोज पे मैं निकला मैं. हाँ आया करने फ्री स्टाइल में स्टूडियो में, खुद के बेडियो से बाहर निकला मैं, खुद के सीढ़ियों में चढ़ना मुझे, कभी किसको पीछे खींचने की हमने ना रखी, कभी किसको पीछे खींचते नहीं, बस देखते हैं नजर की तरफ, मेरे फ्लो सुन के हो जाते ये थोड़े बर्फ, करूँ मैं स्किड बीट पे मैं हीट लाऊं, बस सीट पे पसीना बहाओ, देख के हसीना जब रैप करूँ फ्लो पे तो हो जाता स्लो मेरा टाइम, बचपन से लगा, बचपन से मैंने कहा कभी घुसना नहीं क्राइम में, जब से पता नहीं था हिप हॉप है क्या, तब से सुन रहा मैं हिप हॉप मेरे भाई. हाँ करते जा रहा लेविटेट एलिवेट ग्रेविटेट, करता मैं लोगों को फ्लो से मेरे में, हाँ करूँ मेडिटेट स्मोक पे मैं चोक करता नहीं, मैं बीट पे फ्री स्टाइल करने लगा तो कभी मैं रुकता नहीं. Yeah, that's up. Who wants to go next? You wanna go next? Come through. JMS 2003 तुम्हारे सामने. यो ये कैसी है? चेकुल टाइप लगाओ. The second one. Bro, let me hear how that sounds. Bring me that phone. The second one. Yo. Can you hear me, brother? ये वाला ना? क्या second one? Let it be this.
चलेगा? हाँ देख, आया मैं यहाँ पे बहुत संघर्ष करके, मेरे सीने पे जो दफन है मैं करूँ माइक पे उतार फुल दफन करके। हाँ देख, मेरे सामने मत आ जब लिखने बैठा मैं घर पे, मैं लिखता बहुत सोच समझ के, ये फ्रीस्टाइल है ब्रो मत कर ये सब मेरे सामने क्या। हाँ देख, लिखने बैठा मैं घर पे, हाँ देख बहुत कुछ दफन मेरे सीने में, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ सीने में दफन है। हाँ देख, लास्ट साइफर बहुत राड़ा हुआ, देख हमने बहुत किए मेहनत यहाँ आने तक, बहुत किए लफड़े बहुत किए येड़े चाले आने तक, यहाँ पे देख बार्स भरते मेरे फुल। हाँ देख तलवार घिसता जैसे हम पन्नों पे, जैसे हम पन्नों पे घिसते तलवार वैसे चलते हमारे कलम इन पन्नों पे। हाँ देख चलते दिमाग जैसे हम दौड़ते हाईवे पे। यो ऐसी मेरे बाजू में देख कर रहा रिकॉर्ड, हाँ देखा कर रहा रिकॉर्ड, हमने करने में फ्रॉड। सुनते हम एक दूसरे आर्टिस्ट को, लेते इंस्पायर फिर करते कॉल। हाँ देख, कौन मेरा भाई कौन मेरा भाई, हाँ हाथ उठाओ। यो आने वाला नेक्स्ट यश मेरा भाई, बोलते उसको ओ जी, आओ मेरे भाई आओ मेरे भाई। You can do this. Yeah. छोटा सा ही करूँगा। Yeah. You want me to change the beat or this? Side would be good. This fine? Yeah. Yo, Zaxter. काली थी रात में खेल रहा था मैं वो लफ्जों से, आसमान भी है रो रहा सुन के लफ्ज मेरी नज़मों से। कसमों से बढ़कर होते रिश्ते जुड़े सड़कों से, दोस्तों से मिलता प्यार न मिलता यहाँ पे रिश्तों से। क्रिप्टो सा ऊपर उछले जो देखे वही सीखे, हार्ड थिया लाइफ पर भगवान को ना कभी सोचे। मिला वरदान जो कम किए सवाल, मन के लिख डाले ख्याल जो ना कर पाते के बयान। सुने गाने 24 घंटा रैप शिट कान में लिखे ताने, पिछला पन्ना गानों से भराए सुने ताने। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कहने वाले कहते सिखाया मेरी माँ ने। खासे चारे कौसुब मेरा भाई मेरे साथ है, लास्ट में थे हम बैठे फर्स्ट पे हम आजे। मैथ्स के वो सम डिस्ट्रीब्यूट किए सॉन्ग, न नाचते न हम सीधा करते सर्वनाशे। जैक्स्टर ब्रो, बार्स पे बार्स बोले बार्स। हाँ भाई 100%। 2000 type beat. I've sent you something. What's up? Yeah, why not start it? Let's see. But I'm gonna read my stuff. Alright. Start the beat again. Put it on loop, yeah. 45 सच बाकी क्या आखिरत बाकी डच, क्योंकि इनकी बात ये लगती फेयर है। खैर है मेरे को मेरा खुदा, लेकिन दुनिया ये कह रहे बोली ये जिंदगी शहर है औकात तेरी, ये स्टेरे ऑब्सक्यूरिटी इन योर फेस तेरे पैर में से समझ में नहीं आएगा तेरे को कल्चर चेस से। अरे ट्रिपल ऑन टॉन्ट्रा हे बग हित से दगडा हातच तो वाकव लागतं ओढून काय होणार नाही होती तू वागतो कसा होणार काय कोण तू काय तू मनुष्य नामचे मागे कोण आहे तू बघ तू हा बोले क्या बोले बा मेरा बबल नहीं बाकी बच्ची बाकी साकी नाकाश रोडिंग स्कैट अरे जाना हना पहले खुद से जीत फिर आना आएगा तो मांग में बोलूंगा शायद आहा कोविड फर्स्ट वेव सामा हाई क्यू हा हा या ब्रो oh shit dude nice beat though dude hot beat I don't know how it's sounding live
Yeah, bro, beat is hot. Yo, I got Nawabi ka this instrumental on my desktop. Ooh, dude, whoa, shit. Yes, please, 100%, brother, dude. Let's go. Sweet spot. Let's go. Let this beat on the mic. 100%. Yeah, yeah. So I always smile when they ask me क्या पे हाल. कोई नहीं कर सकता अपने जैसा वार फ्रॉम कोनवा ईस्ट टू वेस्ट कार घबरा दूं जो सुना दूं मैं अपने विचार. स्टाइल ऐसा ब्रो खाली अपने पास ही छे फ्लो अभी भी इनकी बासी छे. मेरे को देखे बोले हबीबी तू अपना खासी छे. दुश्मनी और धोखेबाजी के लिए सिर्फ पासी है. बाजीगर की ये बाजी है. मेरे को देखे पब्लिक मुझ छुपाती जैसे खासी है. तू चिलम बिना साफी है तेरे लिए तो मेरा छोड़ा भाई काफी है. मस्त कीप इट रियल मेरे साथ कुछ खराबी. आई नोटिस बट इग्नोर यू पुंजस बाती भाई मेरे सारे शबाबी. ड्रिंक्स ऑन मी बट नॉट फॉर मी. मिजाजी नवाबी नवाबी है. मिजाजी नवाबी नवाबी है. मिजाजी नवाबी है. वल्लाही मिजाजी नवाबी है. Every stone left turn ना को छोड़ा बाकी थक गए मेरे सारे साथी. लेकिन रुका नहीं फिर भी मेरा ये जुनून जो दौड़े मेरे खून में फुल फ्यूल टैंक के माफिक. न सह सकूं झूठ दोगले चेहरों पे दे मारूं मैं एक शू का छाप. ना मेरा मूड मजाकी मेरा सूट अरमानी. पी के बियर 130 की दूं मैं डबल बख्शीश वल्लाही. नो गवाही नो इत्तफाकी टॉलरेट करूं नो गद्दारी. पैसा होगा तेरा बहुत लेकिन दिल से तू भिखारी. मेरे सामने दिखे तू अनाड़ी. तौर तरीके मेरे जैसे गांधी लेकिन जंग के वक्त बन जाऊं मैं फुल गद्दाफी. ऑपोजिशन की तो है वाट गारंटीड बर्बादी रहम ना जरा भी. मिजाज ये नवाबी है नवाबी है. मिजाज ये नवाबी है नवाबी है. मिजाज ये नवाबी है. वल्लाही मिजाज ये नवाबी है. मिजाज नवाबी है नवाबी है. मिजाज नवाबी है नवाबी है. मिजाज नवाबी है. वल्लाही मिजाज नवाबी है. Yeah. Oh, we'll have fun with that one, bro. That song never fucking fails, bro. Let's go. बुला कभी महफिल में. आ जाओ भाई कभी आओगे. गरीब के घर पे आओ कभी. Yo, this is sick, bro. Let's keep it going, man. Let's do some more fucking freestyles. Let's do some more freestyles. Ooh, lovely. Yeah, what we got? Wait, let me find some more beats. Let me find some more beats. Wait, huh? Whoa, आया करने फ्री स्टाइल में कभी रुकता नहीं कभी झुका नहीं कभी कहा नहीं किसी को भी बेकार की मैं चीजें भी न जाने उनका सर्च मैं भी ना जाने सर्च कहता नहीं कोई बातें मैं कर देता भस्म मेरे फ्लो से जैसे कोई रस्म जैसे पंडित मैं करता हूँ वाइब पूरे टाइप स्टीरियोटाइप कभी नहीं बजा जो भी बजा मैं तो बजा दिल की बातें जो भी सजा तो भी बचपन से मैं सजा बस हिप हॉप के लिए मैं हिप हॉप के लिए जान दूँ हिप हॉप के लिए. हाँ पहले दिन से सीन में पहले दिन से ग्रीन में काफी ज्यादा दिन बिताए मैंने खुद के ही राइम्स में सोते सोते कभी कभी लोरियो के जैसे मैं खुद को ही बार्स मेरी सुनाऊं मैं गवाह हूँ मैं वो रातों के लिए खुद के गवाह हूँ जो बिताए अकेले कभी थका नहीं कभी झुका नहीं मैं कभी रुका नहीं फ्लो मेरा रुका नहीं बीट आने दे बीट जाने दे लेकिन यहीं पे मैं खड़ा खुद से लड़ रहा मैं आगे आगे बढ़ रहा खुद के लेन में इंसेन लड़का काफी ज्यादा ब्रेन्स में राइम्स मेरे चले पूरे दिन रात हिसाब हर चीज का रिकॉर्ड जैसे कैशियर मैं लेके वाइब लेके चलू रोलेक्स लेकिन कैसियो जैसे फ्लो तुम काफी बासी हो दूर रहो तुम थोड़े काफी बासी हो हे लेट्स गो जेएमएस मेरे भाई.
Reload the gun, bro. Yo, reload करा beat, full scene. हाँ reload करके beat, हमने थूके वो scene. हाँ देख सीने में वो दर्द छुपी. हाँ देख बोलते माइक पे आके जो हाँ बोल न सकी. हम लिखते वो बातें जो हाँ हम लिखते जो बातें जो हम न सह चुकी. देख चलते दिमाग में वो विचार जो हमने ना करा इस्तेमाल. देख चलते वो जिंदगी में, हम दौड़ते वो जिंदगी में. हम चलते वो जिंदगी में, हम दौड़ते वो जिंदगी में. हाँ देख ड्रॉप गिरा तो मेरा देख मुंह खुलता. देख राइम आता निकलता जैसे बॉम्ब गिरा. बॉम्ब गिरा तोप गिरा तो फूटा. दिवाली आके गया बॉम्ब फूटा. क्या बोलूं अन्ना छूटा, रॉकी छूटा, ये फूटा. क्या बोल तू मेरा बोल छूटा. यो बसते रहते अपन. Yeah. Yeah. Hey Zeren. रोका नहीं खुद को कभी भी, बड़ा सोचने से जख्म नहीं हो मुझ पे तेरे खरोचने से. सुन लिया इनको काफी जो ये ढोस देते, बड़बड़ करने वालों को यहाँ पे रोज देखते. दो बातें करने से पहले हम सोच लेते. सबूत चाहिए तो बेटा आके ठोस ले ले. खुली इनकी आंखें लेकिन ये बेहोश रहते. मौका हाथ से निकल जाए तो ये नशे को दोष देते. बात करे मुझसे जो बच के दे डालू उसको मैं कस के. रह बड़ा तू मेरे गुस्से से बच के. नशे नहीं किए मैंने सस्ते, आए नहीं किसी के वश में करसते. बादल नहीं बरसते, बेवकूफ ये हमको समझते. लगा तू इनकी में रस्ते फिर दिखा दे तू मुझको हंस के. नींद नहीं आई जब मुझे रात में, भर दी किताब मैंने मेरे जज्बात से. जिया नहीं कभी भी किसी के हिसाब से. मिजाज मेरे हमेशा से ही नवाब के. तो आदत है मेरी रखने की ऊंचे ख्यालात. मेरी अक्ल और मेरा जुनून मेरी जायदाद. तेरी सोच छोटी बड़े मेरे ये अल्फाज. बदल जाएंगे तेरे भी एहसास. कभी देखे तू जो हुआ मेरे साथ. देखा जाता नहीं मुझे दर्द है. सर नहीं झुका ये किसी के भी असर से. मेरा बाप देखे मुझे गर्व से. मेरी माँ को बोले मेरा छोटा बेटा मर्द है. पीछे नहीं हटे कभी भी अपने फर्ज से. दवाई नहीं लेते कभी भी. सर दर्द के उधार नहीं लिया किसी का, लेकिन हाथे हमेशा पहले रहते जैसे लिया इनसे कर्ज है. मार ले तू शॉट बेटा मेरी तरफ से. जमाए रखे अब्बाम पे अपने ही कब्जे. महफिल जमाए रखो किया हमने अर्ज. अगर हमने जिया नहीं तो ये हमारे नहीं लफ्ज है. Hey Zeren, put it down there. Hey Zeren, hey Zeren, hey Zeren. Remember the fucking name, guys. Yeah. Let's go. That's what's up. That's what's up. Now come, who's gonna top that? Come on, who's gonna top that? Let's go. You want to do same beat? Yeah. Whatever. What kind of a beat you want, bro? Lo-fi type, R&B. Lo-fi R&B type. भाई ये मैं कट कर रहा हूँ. मेरा बैटरी कम हो गया. ऐसा? चलेगा? तेरे सामने ये hey, hey. Yo, Zaxter. ये बारिशें मुझे तेरी याद क्यों दिलाती. तू आके गई पर तेरी ये याद क्यों नहीं जाती. पूछे खुश है तू या खुश हूँ मैं. पूछे खुश मैं या खुश है तू. बात तेरे वास्ते में बोल ना सका. दिल के रास्ते में तब खोल ना सका. पूछे खुश है तू या खुश मैं. खुश मैं या खुश है तू. वादते सफर में बनेंगे हम सफर पर. सफर है तो चालू लेकिन साथ नहीं है हम. मगर से तो क्या तेरे सामने ये चांद भी तो ठहर जाए.
सच बोलूं तू ना बातों से ना रह जाए। मिलना मिलना वे तेरे साथ चलना वे तेरी यादों में खोया कब से मैं हूँ तेरा मिलना मिलना वे तेरे साथ चलना वे तेरी यादों में खोया कब से मैं हूँ तू ही मैनू हीर लगना तेरे बिना कोना सोना लगदा तू ना कभी अकेला छड़ना मैनू मैनू तेरा मिलना मिलना तेरे साथ चलना वे तेरी यादों में खोया कब से मैं हूँ तेरे सामने ये चांद भी तो ठहर जाए। सच बोलूं तू न बातों से ना हम कभी फेर जाए। ऐसे तो काशी काफी किया करता पर मैं तेरे सामने आ जाऊं तो दिल मेरा रुक जाए। अभी आशिक नहीं कहते इसको तो हम आशिकी में मर जाए। ऐ, ऐ, ऐ। But he's very good musically. Bro, like I keep telling this guy, bro, like musically he's pretty sound, bro. He's solid with the rhythm. वैसे ये 4 लाइनें लास्ट का ना मैं फंबल करके मैंने फ्रीस्टाइल मार दिया। So that's what up, bro. That's what's up. Like we out here, guys. We out here at yeah, go for it, bro. See, look, check this out, guys. We are out here in Pune recording studio. And this is what we do, man. We just come out here and we just hang out. Hai kya nahi? We just hang out. We just do our thing. We just spit some bars. We just do some ciphers and we just have some fun, bro. Like, it's just whoever is a rap lover is welcome, bro. Welcome in my home. Welcome in my, in my clan, in my tribe. And it's about love and it's about rap, bro. That's what it's about. So you know where to find me. If you don't DM me, I'll tell you where to find me. As long as you're nice, as long as you're good, you guys can come through. We just have fun, bro. We just have fucking fun. And ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं तेरे से बड़ा, ये तेरे से बड़ा, ये स्मॉल डिक एनर्जी इधर नहीं चलेंगी. हाँ, स्मॉल डिक एनर्जी इधर नहीं चलेंगी. और वो होने क्या वो एम हॉगिंग नहीं है भाई. ये I'm better than you, मैं तेरे से बेहतर हिप हॉप करता. All those insecure fuckers can stay away. Okay, we just love rap and we just love having fun. Like that's what it, bro. Like, you know what I mean? Yeah, that was like we just went online. Like I didn't even know if this live setup would work. We just had the backdrop. We just got the table outside. Everyone else joined. It was just me and Shaden in the beginning. और फिर JMS आया, फिर अल्तमाश आया, फिर like people just started coming in. So that's what happened. We were not even going to like stream this live. We were just going to like record it maybe and don't know do what with it. But it's a good thing we streamed it. So that was fun, guys. I think we'll end the stream now. And what do you want to spit some? Yeah, I want to spit some. Come through. So Altamash is going to give us a closing one. Ooh, lovely. It sounds similar to what you were just saying. Yeah. And if people can vibe with that, it'll be fucking lovely. What do you want? I think I could go on the same beat that was just playing. I'll try this one. Well, Latina. Yes, no. No, previous one was better, if I may. I think. Let me spill facts in your face, your brain scattered. Girlfriends, people, seniors, teachers don't matter. Making problems fatter. Good day they shatter. If honest, mad harder than self in a platter for naked truth. Our grammar, good book, naked chatter. Stand what I'm saying, yeah, message or trust sort, Nick. I am just a comic. Gibberish to a sad alcoholic. Swapping his paid for his body is tragic. Outside he's happy, inside he's not. Haha, magic. Dumb, lethargic. IQ to EQ, he needs a shoot. He's got a hammock, damage, sachet, ego, planet. Your inner sleep. Honey, I can't stand it. Shit, sorry, bro. What was that, guys?
So we'll see you guys soon. Catch you guys soon on the next one. I hope you all had fun. We'll do like a weekly episode of this shit maybe. Let's see how it goes. I got so many products now, bro. We got the Cypher. We got this. We got a bunch of things going on. Alright guys. See you soon. Peace. Peace. Everybody come show your faces, man, before you go. Wait. You'll come. Come in, bro. Zaxter. Please. घुस जा अंदर. इसको हटा साइड में. Yo, Pune recording studio, motherfuckers. Just tell him. Thank you, bro. Lovely, thanks. Honestly. Bye. Peace. Bye guys. Peace. Peace.